जालंधर के सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में स्पाइस शेफ मसालों के सहयोग से वसुदैव कुटुंबकम थीम पर यूनाइटेड वर्ल्ड फेस्ट 2019 करवाया गया। विद्यार्थियों ने इटली, यूके, चीन, इजिप्ट, पुर्तगाल, जाम्बिया, इंडोनेशिया, दुबई, नेपाल, अफगानिस्तान आदि 10 अलग अलग देशों के भोजन और संस्कृति का प्रदर्शन स्टॉल लगाकर किया। फेस्ट में स्टूडेंट्स ने विभिन्न देशों का नृत्य व गीतों को भी पेश किया। चीन की संस्कृति पेश करने वाले विद्यार्थियों ने फैन, ड्रैगन, लालटेन नृत्य पेश किया। मिस्र ने पिरामिड व मम्मी की प्रस्तुति दी। वहीं पुर्तगाल की संस्कृति दिखाने के लिए विद्यार्थियों ने क्रूज, झरना, अफगानिस्तान ने 78 नृत्य, वहीं इटली का इटालियन मेट्रो स्टेशन, दुबई का बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, पाम द्वीप दिखाया गया। इसके साथ ही नेपाल की माउंट एवरेस्ट और पशुपतिनाथ मंदिर की सबसे ज़्यादा सराहना हुई। वहीं इंडोनेशिया का ज्वालामुखी, यूके का स्टोनहेंज, विंगवेग, लंदन आई और लंदन बस की भी प्रदर्शनी लगाई गई। आपको बता दें, जाम्बिया ने इस पूरी प्रदर्शनी में पहला स्थान हासिल किया, वहीं नेपाल सेकंड पोजीशन पर रहा। फेस्ट में फॉर्चून एवेन्यू के जनरल मैनेजर सब्यसाची चटर्जी और स्पाइस शेफ मसालों के हिमांशु वाधवा ने जज की भूमिका निभाई। पहला स्थान हासिल करने वाले जाम्बिया को 5100 रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाले नेपाल को 3100 रुपये और तीसरा स्थान पाने वाले अफगानिस्तान को 2100 रुपये कैश प्राइज दिया गया और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। यहां सिटी ग्रुप के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी को चेयरपर्सन परमिंदर कौर चन्नी, मैनेजिंग डायरेक्टर मनवीर सिंह, वाइस चेयरमैन हरप्रीत सिंह, कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर JS कालरा और CTIHM के डायरेक्टर डॉक्टर भरत कपूर के साथ दिवॉय छाबड़ा मौजूद रहे। जालंधर से वन नेटवर्क की रिपोर्ट।
Hi, how are you? Fine, I'm fine. This is a very beautiful stall of Zambia. Could you please elaborate in a brief about the country? Okay, so I'll begin with the facts right at the back. So Zambia is located in Africa, the southern central part of Africa. Okay. And it's been picked and put out there. Okay. So Zambia has got 10 provinces with different languages, about 73 in total. It's really a small country. Okay. It's a landlocked country. Zambia is a democratic country with different presidents in the history, just right ahead of Currently, who is the president of Zambia? His Excellency Mr. Edgar Chagwa Lungu. Okay. Yes, and we have different economic sources. That is when it comes to mining, agriculture, and we also have different farming activities that are going on. Okay. Zambia has so many attires. You can see the beautiful. It's very colorful. What is the reason behind that? It's vibrant because people want to express their art in different attires and different colors. What you are studying here in Jalandhar? Mass communication and journalism. Okay. Yes. So how did you get here from Zambia to Jalandhar, India? Well, globalization in the sense that the people had to come to our country and we got the opportunity to come and study. So how many friends are with you right now from Zambia itself? We are so many. Well, we are over 20. Okay. Yes. And how is the education sector there in Zambia? Till school level or like what all? Well, I think it's high level education and it's quite different from the education setup here. Somehow, somewhere, when it comes to the exposure, we may have more exposure here as compared to our country. Okay. Yes. So how about here? How are you feeling here? Since when you're here right now? From 2016, I've been here. Since 3 years you're here. For 3 years now. You're about to complete your course, yes, right? I'm about to complete my course. So, what next is your plans? Well, I want to pursue my master's in mass communication. Okay. And after your studies, back to Zambia or what? I may not go to Zambia, I may go to another country. I think I'm just a curious learner who wants to get knowledge from different countries and like my own country. Then take it back to my country. Oh, that's too great. Yes. Okay. So how about the food of Zambia? So we have the food just right there. What all? Can you explain a bit? Our staple food in Zambia is nshima. It's made with corn, sweet corn, the famous sweet corn, and then it's pounded and then grinded and made into some thick paste. Okay. People usually eat it with veg meals or non-veg. Okay. Yes. So we usually have it. Okay. Nepal is a Southeast Asian country. It is a landlocked country and it is the second richest country in water resources. And it has a slogan called Unity in Diversity. Around 123 ethnic groups dwell here. Pashupatinath is one of the most complex religious place of Nepal. We have Mount Everest, the world roof called the highest peak of the world. Its height is about 8,848 meters. And you are the student of hotel management, right? No, I'm a student of BSc Agriculture and I am basically from Nepal. Okay, what is the agricultural resources in Nepal right now? Nepal, 80% people are busy, engaged in agriculture. Okay. Nepal is an agriculture country. Around 50% of GDP depend upon the agriculture. What specialty you grow in Nepal? What all? In Nepal, we have every type of climate. We have mountain region, hilly region and Tarai region. So we can grow any type of crops there. What type of major food specialty you have in Nepal? Major food is rice, vegetable and pulses. And that green leafy vegetables which we call spinach and in Nepal we call rayo sag. And how is the relation to India? Nepal has a very good and diplomatic relation with India from the ancient times. And it is going further to be more bonded. This was the Nepal stall in City University and it's a very beautiful stall right now. Namaste is Nepal way. Greeting. Thank you. ਅੱਜ ਸੀਟੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੈਸਟ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਲਚਰ ਫੂਡ ਦ ਵੇ ਦੇ ਲਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ
घर विच रहने हैं, साडा पूरी दुनिया एक फैमिली वांगू रहिए, ताकि एक मैसेज आवे यूनिटी का। लोही बच्चे ने आज प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, स्टॉल्स लगे हुए हैं ताकि जो डिफरेंट कंट्रीज़ का फूड कितना का होंदा है वो डिस्प्लेड है। सो आई रियली थैंक द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ ऑफ सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, डॉक्टर भरत कपूर, फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच इवेंट्स। सर बेसिकली जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन चल रहे हैं इस वक्त, आपको भी मालूम होगा जी, तो जनरली अगर हम पीस शो कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में, एजुकेशन के द्वारा हम शो ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इससे अच्छी और कोई बात हो सकती है? सर हमारे यहाँ देखिए काफ़ी स्टेट्स और कंट्रीज से बच्चे पढ़ते हैं। इंडिया हमेशा जाना गया है एक पीस मैसेंजर की तरह। यूनाइटेड नेशंस ने भी इंडिया को बहुत बारी ये तारीफ़ मिली है कि इंडिया ने जितनी बारी भी पीस को आगे लाने के लिए बहुत कोशिश की है। हम उससे कभी नहीं पीछे हटेंगे, बट हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम तभी पीछे नहीं हटेंगे, जो कि इंडिया ने सबूत दे दिया है। बट स्टिल इंडिया हमेशा दोस्ती का हाथ आगे पहले बढ़ाता है, बढ़ाता रहेगा, क्योंकि हमारे ब्लड में ये है, हमारी हिस्ट्री में, हमारी संस्कृति में ये है कि हम सबको साथ में लेके चलते हैं। इंडियंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, खास करके पंजाबीज, और आपको पता है वो मैसेज दे रहे हैं आज भी कि हम सब एक हैं। एनी मैसेज टू द वर्ल्ड राइट नाउ? सी यूनिटी, प्यार और गिविंग जो आज की डेट में देना होता है उससे कभी भी कम नहीं होता, कुछ बढ़ता ही है। जितना दोगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा, वो चाहे प्यार है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो आपकी एजुकेशन है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जी सर, आज सिटी इंस्टीट्यूट में एक यूनाइटेड वर्ल्ड फेस्ट करवाया गया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये यूनाइटेड वर्ल्ड फेस्ट हमने कराया है ऑन अ थीम वासुदेव कुटुंबकम। This theme is basically given by Shri Narendra Modi ji, which means the world is one family. So we have depicted, showcase basically 10 different countries, जहाँ पे students ने बहुत अच्छा काम किया है, working day and night, showcasing their dances, currencies, religion, and many other things. They have put up their best effort. Basically, the main purpose of organizing this event is to teach students about the unity and the teamwork. What is the specialty here you find out, like the food structure here? Basically, the speciality of this event is the student has showcased everything about their countries. Like if I namely say Zambia, so Zambia has come up with their food, with their culture, with their dance, with their currency, with their religion. Okay. So in a complete package we can say. At your background here is a beautiful dresses displayed. So what is the special thing about it? The display made by the fashion designing students. Okay. Every month they change it on the different theme. Like this is a theme of Holi, which is our upcoming festival. So they work on theme every month. Okay. And what about the hotel management? Hotel management, our students are working with United World Fest, and yes, we are coming up with the inter-departmental, inter-college, the competition, the hospitality fest, in which food competition will be there, front office will be there, housekeeping will be there, everything will be there. And how enthusiastic about City Institute promoting their culture, the world? The city group management is very enthusiastic. They support us fully in organizing these events. Especially, they appreciate each and every student for organizing these events. Every year we organize this. Last 6 months before, we have organized United India, similar on this pattern. So they support us, keep us supported. We thanks city management. हाँ जी सर, आज हम सिटी इंस्टीट्यूट में हैं, तो क्या खास बात है सिटी इंस्टीट्यूट? सिटी इंस्टीट्यूट में सबसे पहले इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इन्होंने इतना अमेजिंग शो पुट अप करा है। ऑल दी क्रेडिट गोज टू दी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सिटी ग्रुप का, जिन्होंने यहाँ पे यूनिटी इज़ वन को एक कंसेप्ट बना के इन्होंने शोकेस करा है। द स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड एंड वी फील ऑनर्ड टू बी एसोसिएटेड एज द मेन स्पॉन्सर्स टू दिस इवेंट। स्पाइस शेफ इज़ बीन ऑलमोस्ट 1.5 years we have started selling in Punjab now. So we are basically a spice blending company. We manufacture spices, right from blended spices to whole spices to raw spices. So we have varieties of packaging for institutional use, for kitchen, household use, and yes, I would like to introduce to certain things. This is a basic Kitchen King masala. So used anywhere in the Indian gravies, you can gel them up. So
So basically you have told that you have been in Punjab recently and starting selling here as a market. तो इससे पहले आप कहाँ थे? Okay. इन लोगों ने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था we started from Himachal. Okay. So we are selling in Upper Himachal as well. अगर आप tourist destinations की बात करेंगे हम लोग धर्मशाला में we are selling our spices. We are in Shimla, we are in Kangra, we are in Chamba. And if I talk about Punjab, so we have our main super stockist in Amritsar, Mr. Sunil Mahajan है वहाँ पे Mahajan Traders के. And वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करा है. Now in the other cities of Punjab, we are in Batala, we are in Patiala, we are in Ludhiana, we are in Jalandhar, and we are planning to expand in the more North Indian region. What is the main difference between your masalas and other masalas in the market? What makes the difference? The blend, the secret recipes. Being a chef myself, I created those secret recipes, and I'm sure that everybody's gonna love them. And what is the reason behind Spice Chef, the name behind it? Okay, so being a chef, as I told, I worked as a chef. I'm a 2005-2009 batch hotel management graduate, so I worked for almost 3.5 years as a chef. I have my base kitchen in Badi and we make almost 5,000 meals a day. So that's another thing that we do. That's the brand called Mughal Gourmet, that's I head. And this, so you know, spices, natural spices, good spices, and being a chef, so that combined and they bring it together, Spice Chef. That's very nice. Thank you very much. Thank you for being with us. Thank you.